Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fis sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum halakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum fi zamanin man taraka minkum usra ma bihi halaka summa ya'ti zamanun man amila minkum bi usri ma bihi naja. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh daripada Masjid Baitul Karim, para asatidz dan Bapak yang mulia yang saya sama-sama hormati dan semoga Allah muliakan. Saya belajar untuk samina wa ta'na atas putusan Amir Sab tadi pagi musyawarah bahwa pada asar ini harus memberikan mujakarah tentang pentingnya iman dan amal soleh. Alhamdulillah hadirin yang mulia, kita setelah melaksanakan sholat asar secara berjemaah, dan sholat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjemaah ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Tadi sudah kita melaksanakan sholat asar, dilanjut dengan kita kumpul dalam suatu tempat yang sangat mulia, di mana istilah masjid ini salah satunya adalah Baitullah, tempat yang sangat Allah muliakan di muka bumi. Kemudian istilah yang lain adalah Baitul Maghfirah, tempat pengampunan dosa masjid ini. Kita ini punya banyak dosa. Begitu keluar masjid saja, mata kita memandang hal-hal yang bukan haknya untuk dipandang. Ini dosa, kita akui sebagai dosa. Maka tempat yang paling layak untuk mensucikan dosa kita ini adalah di masjid, sebagai Baitul Maghfirah. Makanya dianjurkan oleh alim ulama, bila mana kita mau berjalan ke masjid, diusahakan wudunya itu di rumahnya. Ambil wudunya itu di rumahnya, sehingga begitu melangkahkan kaki kanan ini menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Begitu berjalan dengan kaki kiri, ini meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाई ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल बड़ा इंसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको अपनी दीन वाली मेहनत की खिदमत में देने की तौफीक अता फरमाई। भाई ने फरमाया हम सबका मुज़ाकरा है। मैं इंडोनेशिया से आया हूँ मैं दीन को सीखने के लिए, ये नहीं कि आप लोगों को दीन सिखाने के लिए आया हूँ, बल्कि मैं दीन सीखने के लिए आया हूँ। हम लोग जो बैठे हुए हैं ये दीन सीखने के लिए बैठे हुए हैं कि दीन मेरी ज़िंदगी में सारे इंसानों की ज़िंदगी में आ जाए। भाई ने फरमाया कि अल्लाह पाक का एहसान हुआ, करम हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको अपने घर बुलाया और बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। फिर दीन की मेहनत की फिक्र में बैठने की तौफीक दी। भाई ने फरमाया मस्जिद जो है ये मोमिन के लिए ऐसा है जैसा जन्नत। फिर भाई ने फरमाया कि मोमिन के लिए जो है ना हिदायत की जगह है वो मस्जिद है। मोमिन जो है ना हिफाजत में रहेगा तो मस्जिद के अंदर। भाई ने फरमाया हिदायत मिलेगी इसको तो मस्जिद के अंदर। Hadirin mulia, sahabat bila berjalan ke masjid ini langkahnya itu dipendek-pendek supaya langkahnya terhitung jauh. Bahkan ada sahabat yang mengitar-ngitar dulu, keliling-keliling dulu bila berjalan ke masjid. Karena mereka paham, begitu jauh ke masjid, derajat mereka lebih tinggi, lebih banyak dosa yang gugur. Kemudian istilah yang lain daripada masjid ini adalah Baitur Rahmah. Baitur Rahmah, apa itu rahmah? Kasih sayang Allah, kecintaan Allah, Baitur Rahmah. Makanya begitu kita masuk masjid, melangkahkan kaki kanan, kita membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Di masjid ini ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Bila mana Allah telah sayang kepada seorang hambanya, kasih sayang Allah ini ulama katakan 70 kali sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana ibu ini sayang pada bayinya, pada anaknya. Sementara Allah, kasih sayang Allah ini 70 kali sayangnya seorang ibu kepada bayinya, kepada anaknya. भाई ने फरमाया देखो अल्लाह पाक ने मुझे और आपको अपने घर बुलाया और
नमाज पढ़ने की जो तौफीक अता फरमाई। भाई ने फरमाया जिसे अल्लाह पाक अपनी रहमत की निगाह से देखते हैं उसको अपने घर बुलाते हैं और बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाते हैं। भाई ने फरमाया जब हम मस्जिद के अंदर है, जब हमने दुआ पढ़ी, हमने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दे हमारे लिए। तो अल्लाह पाक ने जो है ना दवा के साथ में अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। मस्जिद के अंदर अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है हर वक्त। जब हम मस्जिद में जितने देर रहेंगे तो इतनी अल्लाह पाक की रहमतें अल्लाह पाक की जो है ना हमारे ऊपर बरस रही होंगी। Hadirin yang mulia, istilah yang lain mesti Baitul Sholihin, tempat kumpulnya orang-orang soleh. Tempat kumpulnya orang-orang soleh. Kemudian Baitul Muttaqin, tempat berkumpulnya orang-orang yang ada ta'aluk kepada Allah, ada ketakutan kepada Allah. Kemudian disebut juga Baitul Riyadul Jannah, taman-taman surga. Semua kita ingin masuk surga. Nah, tamannya di dunia sudah ada, yaitu masjid sebagai Riyadul Jannah. Sangat bohong kalau kita mau masuk surga tapi tidak pernah ke masjid. Itu bohong, mimpi. Kemudian juga disebut Baitul Mu'minin, tempat berkumpulnya orang-orang beriman. Tempat berkumpulnya orang-orang beriman. भाई ने फरमाया देखो हज़रत साहब रज़ी अल्लाह ताला मजमहीन जब मस्जिद की तरफ आते थे उनके घर नज़दीक होते थे, वो छोटे छोटे कदम लगाते थे, छोटे छोटे कदम रखते थे कि हमें ज़्यादा नेकी मिल जाए। और मस्जिद की तरफ आने में जो है ना जिस कदम लगते थे वो कदम जो है ना कदम पे एक नेकी मिलती थी। भाई ने फरमाया ये जो ना मस्जिद है ये सालिहीन की जगह। मस्जिद में मुत्तकी ऐसा खुश रहता है जैसा पानी में जो है ना मच्छी खुश रहता है। भाई ने फरमाया मुत्तकी जो है ना ये जो मस्जिद के अंदर खुश रहेगा। फिर भाई ने फरमाया सालिहीन जो है ना मस्जिद के अंदर जो है ना रहेगा। फिर भाई ने फरमाया जो जन्नत की जो टुकड़े है वो मस्जिद है, मस्जिद में जब ये रहेगा ऐसे जैसे जन्नत में ये बैठा हुआ है। Hadirin mulia, ulama katakan masjid ini sebagai jantungnya satu kampung. Jantungnya satu kampung. Dalam diri manusia ini ada sebuah jantung di sini. Selama jantung berdetak, maka darah terpompa ke seluruh tubuh. Masih ada tanda-tanda kehidupan. Kalau jantung sudah tidak berdetak, udah mati, berarti pindah alam dari alam dunia ke alam kubur. Nah, ini juga masjid juga seperti itu. Merupakan jantungnya satu kampung. Ulama yang waro kalau melihat kemakmuran satu kampung ini melihat masjidnya, apakah amalnya hidup, amalan masjidnya hidup apa tidak. Ini ulama yang waro melihat daripada kemakmuran, kesejahteraan suatu kampung ini melihat daripada masjidnya. मैंने फरमाया इंसान जब सांस लेता तो इसका पूरा जिस्म जो है ना जिंदा होता है, सारे जिस्म इसकी हरकतें करते हैं। मस्जिद के अंदर अमाल जिंदा होगी, अल्लाह पाक इसकी वजह से पूरे गांव के अंदर जो है ना अपने रहमतें बरकतें जो है ना उतारेंगे। मस्जिद के अंदर अमाल नहीं होगा तो पूरा जो है ना गांव जो है ना परेशान होगा। Hadirin yang mulia, bahasanya ulama katakan waktu dulu Rasulullah membangun Masjid Nabawi ini selama 7 tahun awal. 7 tahun awal ini Masjid Nabawi sangat sederhana sekali. Masjid Nabawi di Madinah itu. Ini tiang-tiang penyangganya terbuat dari batang-batang pohon kurma. Kemudian langit-langitnya terbuat dari daun-daun pohon kurma. Tidak ada karpet, keramik atau alas, tidak ada. Gurun pasir saja. Bila mana hujan jatuh, itu air itu jatuh ke tanah, ke masjid itu, subhanallah. Namun sedemikian sederhananya Masjid Nabawi, oleh Rasulullah dihidupkanlah 4 amalan yang merupakan rohnya Masjid Nabawi. Apa itu? Ada suasana dakwah ilallah. Ajakan taat kepada Allah. Dakwah ilallah. Kita ajak manusia ini bukan kepada pimpinan kita. Kita ajak mereka bukan kepada organisasi kita, tapi ad'u ilallah. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Ala basiratin ana wa matabi'ani. Ila akhir ayat. Jadi dakwah ilallah ini bagaimana mengajak manusia taat kepada Allah. Tempatnya di masjid. Kalau sudah masuk masjid, silahkan kasih kepada alim ulamanya untuk dibina lebih lanjut. Kemudian hidup suasana taklim wa ta'alum, proses belajar mengajarnya hidup. Dahulu kala waktu zaman Rasul belum ada sekolah, belum ada madrasah, belum ada perguruan tinggi, belum ada namanya pondok pesantren, belum ada sekolah-sekolah. Namun anak-anak sahabat menjadi muhadis-muhadisah, menjadi alim-alimah, menjadi hafiz-hafizah, subhanallah. Melalui taklim yang dibina oleh Rasulullah langsung. मैंने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीने के अंदर जो मस्जिद बनी 7 साल तक जो है ना उसमें अमाल होते थे। उसकी छत किसकी बनी हुई थी? जो है ना खजूर की जो है ना पत्तों की जो है ना ऊपर डाली हुई थी और खजूर के तनों से जो है ना उनकी दीवारें बनाई थी और पत्थरों की दीवार बनी थी और जो है ना उसके अंदर जो लगाए थे। जब बारिश होती थी पानी नीचे गिरता था और नीचे जो है ना मिट्टी होती थी उनके चेहरे पर जो है ना मिट्टी लग जाता था। लेकिन अमाल उसके अंदर जो है ना अमाल उसके अंदर करते थे। उस अमाल की बरकत से अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया को जो है दावत वाली मेहनत को पहुंचाया। उसमें 4 अमाल होते थे बड़े बड़े।
दावत इल्लल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की वदायन, अल्लाह पाक की बड़ाई उनके सामने बयान करना, इस दावत वाली मेहनत में लगे हुए थे। और इस दीन की मेहनत के अंदर जो है ना लोगों को हिदायत अल्लाह पाक देते थे, और जो ना लोगों को हिदायत मिलती थी, लोग दीन और दीन के मेहनत के ऊपर आते थे। मैंने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना कोई स्कूल था, ना कोई कॉलेज थी, ना कोई मदरसा था, ना कोई ऐसी जगह थी कि लोग उसके अंदर वो करते थे, हाँ, या इबादत करते थे या दीन सीखते थे, बल्कि मस्जिद नबवी के अंदर जो है ना वो दीन की मेहनत को सीखते थे। और मस्जिद नबवी में के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना दीन सीखते थे और दीन की मेहनत में लगते थे। उसी में जो है ना लोग आलिम बनते थे, उसी में हाफिज बनते थे, उसमें शेखुल हदीस बनते थे, क्योंकि दीन की मेहनत उसी जगह लगी हुई थी। कोई तालीम और तालुम में लगा होता था, कोई जिक्र में लगा होता था। तो मेरे भाई बुजुर्गो, दोस्तों, अमाल जिंदा थे, उसकी वजह से अल्लाह पाक लोगों को हिदायत देते थे। Hadirin yang mulia, kemudian hidup suasana daripada zikir dan ibadah 24 jam. Semua sahabat itu menginfakkan waktunya bergantian. Subhanallah, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Jadi zikir ibadahnya hidup. Ada yang salat nafil, ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang zikir ibadahnya hidup 24 jam. Subhanallah. Sekarang yang hidup pasar 24 jam, rumah sakit 24 jam, masjid tidak ada yang hidup 24 jam. Padahal ini adalah jantungnya satu kampung. Kalau masjid dipersonifikasikan sebagai pabrik, ini pabrik kebaikan. Masjid ini merupakan pabriknya kebaikan. Coba pabrik di dunia saja itu sampai 3 kali shift itu, supaya 24 jam hidup untuk memproduksi suatu kebendaan yang sifatnya fana, yang sifatnya akan rusak. Sedangkan masjid ini akan memproduksi suatu orang-orang beriman. Dengan iman sejarah saja, Allah akan beli dengan surga yang paling kecil sebesar 10 kali dunia, subhanallah. Sehingga dahulu kala masjid ini 24 jam hidup. Kemudian hidup juga suasana khidmat dengan akhlak Rasulullah. Yaitu dengan akhlak Rasul itu Rasulullah. मैंने फरमाया कि मस्जिद नबी के अंदर वो तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अमाल की बरकत से अल्लाह पाक लोगों को हिदायत देती थी। 24 घंटे मस्जिद नबी आबाद थी। लोग आते थे मस्जिद के अंदर जो है ना अमाल करते थे। कोई जिक्र में लगा हुआ है, कोई कुरान की तिलावत में लगा हुआ है, कोई दावत में लगा हुआ है, और अमाल जारी था। कोई नफल पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है। तो भाई ने फरमाया कि 24 घंटे जो है ना मस्जिद नबवी के अंदर जो है ना लोग आते थे और जाते थे, अमाल से ना आबाद था। आज हमारी मस्जिद गैर आबाद हो गई, खाली नमाज के वक्त खुलती है और फिर बंद हो जाती है। भाई ने फरमाया हमारे बाजार 24 घंटे आबाद है, अस्पताल जो है ना 24 घंटे आबाद है, जो गैर आबाद है वो मस्जिद। तो भाई ने फरमाया हमारी जितनी भी जो इलाका है इनके जिम्मे है कि मस्जिद को आबाद करें और मस्जिद में अमाल शुरू करें। इसमें जो है ना अखलाक भी सीखेंगे, मामलात भी सीखेंगे, और जो है ना लोगों के साथ जो लेन देन है वो भी सीखेंगे, और जो है ना खिदमत भी करेंगे लोगों की। जो है ना ये सारी चीजें काम सीखी जाएगी मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर अमाल होगा, अल्लाह पाक लोगों को हिदायत देंगे। Hadirin mulia, khidmat dengan akhlak Rasul, khidmat, pelayanan. Pelayanan ini suatu saat nanti, khidmat ini akan disambungkan dengan sendi-sendi ekonomi umat Islam. Salah satunya ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Cuman sekarang ini jangan dulu dibicarakan tentang jiswab ini. Kenapa? Amalan yang paling makruh saja itu sholat sudah ditinggalkan oleh umat Islam. Makanya sekarang ini dikatakan kemaksiatan yang terbesar ini adalah orang meninggalkan sholat. Bahkan ulama katakan seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sholat wajib, itu bisa menutup pintu rahmat bagi radius 40 rumah. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, tertutup pintu rahmatnya oleh satu orang Islam yang tidak sholat dengan sengaja. Subhanallah. Hadirin mulia, akhlak Rasulullah ini ulama katakan ada 3. Pertama, akhlak hasanah. Akhlak hasanah ini orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Dia ngasih saya misalkan 5 perak, saya kasih 5 perak lagi. Nah, ini akhlak hasanah. Akhlak yang kedua ini akhlak nur kalimah. Akhlak nur kalimah ini orang ngasih ke saya 20.000, saya kasih 50.000, lebih baik lagi. Nah, ini akhlak hasanah. Sedangkan akhlak yang paling tinggi daripada Rasul ini akhlak ajimah. Orang berbuat jelek, ngeludahin, ngelemparin dengan batu, namun Rasul doakan, subhanallah. Akhlak ajimah, ini akhlak yang paling tinggi. मैंने फरमाया कि एक हमारी अखलाक है, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अखलाक है। हाँ, तो मस्जिद नबी के अंदर जो है ना लोगों को अखलाक सिखाते थे, मामलात सिखाते थे, लोगों के साथ लेन देन सिखाते थे। भाई ने फरमाया एक तो हमारा जो है ना लोगों के साथ जो मामलात है ये ईमान की से सदा है कि देखो जो लोग हमारे साथ अच्छा करते हैं हम उसके साथ अच्छा ही करते हैं।
अगर कोई हमें जो है ना 1000 रुपये देते, हम कहते कि इसने हमें 1000 दिए, हम भी उसको 1000 देंगे। जो हमें भी फिर इससे जो है ना दूसरी ये है कि कोई हमें जो है ना 1000 दे, हम कहते कि यार इसने मेरे साथ अच्छाई की तो परेशानी के वक्त हम इसको 2000 देंगे, यानी से ज्यादा अच्छाई करी। भाई ने फरमाया एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक थे कि लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार रहे, तो जो है ना उसको बुरा भला कह रहे, तो उनको तकलीफ पहुंचा रहे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, उनको लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। Hari yang mulia, kita ini sudah masuk masjid dan Allah nyatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Saksikanlah oleh kalian sesungguhnya orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, masjid Allah bukan satu masjid tapi ulama katakan masjid-masjid Allah, banyak masjid. Itulah tandanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita yang sudah beriman kepada Allah ini Allah tawari bisnis daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 13. Ini surat As-Saff ini surat Al-Quran surat ke-61. Surah As-Saff. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fis sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum halakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai mukmin, maukah kalian kupertunjukkan suatu tijarah? Tijarah ini ulama katakan bisnis, perdagangan, perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azabku yang sangat pedih. Min ajabin alim. Azab alim ini sangat pedih. Bahkan Rasulullah sabdakan, jangan dianggap enteng, jangan dianggap ringan. Serendah-rendah neraka saja. Begitu orang dimasukkan, dikeceburkan ke dalam kobaran api neraka yang paling ringan, sekalipun, maka otaknya mendidih. Mendidih otaknya. Apa itu bisnisnya? Tu'minuna billah. Berimanlah kepada Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Dan ikutilah contoh-contoh kehidupan Rasulullah. Wa tujahiduna fis sabilillah. Dan berangkatlah di jalan Allah fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dirimu. Sebetulnya harta diri waktu kita bahkan nyawa kita sekalipun ini milik Allah, bukan milik kita. Tapi dalam ayat ini direken, dianggap seolah-olah milik kita. Dalikum helakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Baru selanjutnya janji-janji Allah, yaghfir lakum dzurbakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa dari bayi sampai dewasa ini Allah akan ampuni. Seperti bayi yang berlahir kembali. Tanpa dosa. Putih kembali. Kemudian Allah beri dengan surganya. Di situ dijelaskan surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di bawah surga Aden ini ada sungai susu, sungai madu, bahkan sungai arak pun ada, arak putih dan halal. Kalau arak putih ini, kalau di dunia arak ini berupa botol dan haram. Tapi kalau di bawah surga Aden arak putih dan halal. Kalaupun mau, kita bisa berenang di sungai tersebut. Kemudian Allah akan memberikan pertolongan yang dekat kepada kita. Nusratullah akan bersama kita. मैंने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते कुरान के अंदर आयत के मफ़हूम से कि अल्लाह पाक फरमाते कि मैं तुम लोगों को एक बेहतरीन तिजारत बताऊं जो तुम्हें जो है ना दर्दनाक अजाब से बचाए। तुम लोग ईमान लाओ अल्लाह पाक और निकलो अपनी जान माल से अल्लाह के रास्ते में, और जो ना अल्लाह के दिन के जो है ना सरबुलंदी के लिए, और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ और दावत की मेहनत में लग जाओ। मैं आपको दुनिया में भी कामयाब कर दूंगा और जो अज़ाब है उससे मैं आपको निजात दिलाऊंगा। भाई ने फरमाया इसी के लिए जो है ना अल्लाह के रास्ते में निकलना होता है, मेहनत करनी पड़ती है। अपनी जान माल वक़्त, यानी अपनी जो है ना जान, अपने माल, अपने वक़्त जो है ना अल्लाह के रास्ते में निकालेंगे तो ये दिन की मेहनत ज़िंदगी में आएगा। इससे लोगों को अल्लाह पाक हिदायत फरमाएंगे। भाई ने फरमाया इसके बदले में अल्लाह पाक क्या देंगे? जन्नत देंगे और जन्नत की नेमतें देंगे। भाई ने फरमाया जन्नत की नेमत है जो है ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसका दिल का उसके ऊपर गुजर हुआ। भाई ने फरमाया ऐसी नेमतें हैं, चंद नेमतें अल्लाह पाक ने जो है ना मेरे और आपके सामने जो जिक्र फरमाई, फरमाया कि जो है ना जन्नत के अंदर ऐसी नेरें हैं जो दूध की नेर होगी, यहाँ तो किलो के हिसाब से मिलेगी, वहाँ जो है ना नेरों के हिसाब से दूध चलेगा, और नेरों के हिसाब से जो है ना शराब चलेगी, और जो है ना जो शहद होगा वो भी नेर के हिसाब से चलेगा। भाई ने फरमाया शराब तो दुनिया के अंदर हराम है मुसलमान के लिए, और वो भी कितनी बोतल के अंदर मिलती है, पैसों से खरीदनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह पाक ने इस मुसलमान के लिए जन्नत के अंदर रखी हुई सफेद, एकदम सफेद शराब होगी, और जो है ना जितना पिएगा अल्लाह पाक इसके जो है ना होश को जो है ना खराब नहीं करेगा। भाई ने फरमाया कि उसके लिए अल्लाह पाक ने मुझे और आपको दुनिया के अंदर भेजा है, तो उसके लिए तैयारी करें, अपने अंदर भी दिन की मेहनत को लाने, सारे इंसानों तक पहुंचाने हैं। इंशाअल्लाह तशकीर। Hadirin mulia, kemudian petunjuk pelaksanaan daripada ayat ini adalah
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, chapternya bab babu pitan. Nomor hadisnya kalau tidak salah 2193. Rasulullah bersabda, "Inakum fi zamanin man taraka minkum usra ma umur bihi halaka. Summa ya'ti zamanun man amila minkum bi usri ma umur bihi naja." Wahai sahabatku, ketahuilah, kalau kalian kurangi masa perjuangan agama ini 10 saja, 10% saja dari waktu kalian ini akan binasa. Kenapa? Karena niswatullah, bantuan Allah tidak akan turun bersama kalian. Sehingga sahabat ini samina wa ta'na pada waktu itu. Mereka kerja agama ini 100%, totalitas. Tidak dikurang-kurang sama sekali. Namun Rasulullah sabdakan, wahai sahabatku, ketahuilah, kalau nanti umatku di zaman akhir bisa mampu menghidupkan masa perjuangan agama ini hanya 10% saja dari waktu mereka akan berjaya. Kenapa? Karena niswatullah akan bersama mereka. Allah akan tolong mereka. Allah akan bantu mereka. 10% saja. Hadirin mulia, kita sudah masuk ke fase zaman akhir saat ini. Tidak akan ada umat setelah kita. Masalah. Maka tugas kenabian, tugas nubuah ini ada dalam pundak-pundak kita. Baligho ani walau ayah. Sampaikanlah walau satu ayat, satu hadis. Masalah. Hadirin mulia, kita diminta oleh Rasulullah ini 10% saja. 10% dari waktu kita ini seumur hidup minimal 4 bulan. 3 cilah. Kemudian 1/10 dari 10% dari setahun adalah 40 hari. Dan 40 hari ini ada sejarahnya dalam Islam. Contohnya Nabi Ibrahim ini dibakar oleh Raja Namrud selama 40 hari 40 malam dalam kobaran api ini. Kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun, sama ikan nun ditelan di dalam perut ikan nun selama 40 hari 40 malam. Dan Nabi Yunus sambil berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian pergerakan bayi dalam perut ibu ini 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga ditiupkan roh oleh Allah, menjelma menjadi dewasa kita sekarang ini. Nah, kemudian 3 hari dalam sebulan, kemudian 2,5 jam minimalnya 2,5 jam dalam sehari. Ini 2,5 jam ini untuk menyampaikan pesan amanah Rasulullah kepada 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, ke jiran-jiran kita, ke tetangga-tetangga kita. Kalau kita tidak sampaikan, maka kita akan dituntut daripada tetangga kita. Mengapa? Ketika mereka memasuki pintu neraka, malaikat akan bertanya pada mereka, Alam ya'tikum nadhir? Apakah tidak ada orang yang datang kepada kamu, mengingatkan kamu tentang neraka ini, tentang hari ini, waktu kamu masih di dunia? Dia katakan, tidak ada. Tidak pernah ada yang datang kepada aku malaikat. Begitu. Dia akan bicara seperti itu. Maka untuk menghindari diklaim oleh tetangga kita sampaikan. Baligho ani walau ayah. मैंने फरमाया कि हदीस का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा रज़ियल्लाहु ताला मजमईन से फरमा रहे कि आप अगर दिन के अंदर भी ज़रा भी कमी करोगे तो अल्लाह पाक की मदद आपसे आ जाएगी। यानी अगर 10% भी दिन में कमी होगी तो अल्लाह पाक की मदद आपके साथ नहीं होगी। मैंने फरमाया मेरी जो उम्मत आखिर में आने वाली है वो सिर्फ 10% दिन का काम करेगी, दिन पर जिंदगी गुजारेगी और अल्लाह पाक का 100% उसके साथ मदद होगा। तो भाई ने फरमाया कि ये 10% क्या है? यही जो है ना, जो मेरा भाई बुजुर्ग दोस्त, अल्लाह के रास्ते में निकलना होता है, 4 महीने लगाना होता है और साल में चिल्ला, महीने में 3 दिन, कम से कम 2.5 घंटे जो है ना अपनी मस्जिद को आबाद करना। हाँ, तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये 10वां ईसा है। इसी के लिए मेहनत करनी है अपने ऊपर भी और पूरी उम्मत में भी। भाई ने फरमाया इसी के लिए लोगों के पास जाना होता है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना होता है। हाँ, कि सारे इंसान जो है ना जहन्नम की आग से बच जाए, जन्नत में जाने वाला बन जाए। अल्लाह पाक ने मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी लगाई है, भाई ने फरमाया जो चिल्ला है, ये चिल्ला इस तरह है कि जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 40 दिन 40 रातें आग के अंदर जो है ना उसको जो है ना जिंदा रखा और जो है ना मक्की के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन 40 रात जिंदा रखा। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि जो है ना दिन की मेहनत के लिए जो है ना अपने जान माल वक़्त से कुर्बानी दे दो, अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमा देंगे। आखिर apa yang apa 40 rumah, dari 40 rumah. भाई ने फरमाया कि हमारी मस्जिद के जो 40 घर दाएं बाएं और आगे पीछे जो 40 घर कम से कम तक अल्लाह पाक की दीन की मेहनत को पहुंचा रहे कि वो 100% नमाजी बन जाए और अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। अल्लाह पाक हमें जो है उसके बदले में जन्नत भी देंगे और अल्लाह पाक दुनिया में भी कामयाब फरमाएंगे, मौत के बाद हमारे सब तैयार है इंशाअल्लाह इरादे फरमाएंगे। Hadirin mulia,
Kemudian salah satu Maulana mengatakan, kalau kita berangkat ya Allah waktu bulan puasa ini, kalau kita berangkat fisabilillah, maka 1 rupiah yang kita belanjakan di jalan Allah, Allah akan ganti, Allah akan berikan pahala 700.000. Sedangkan kalau kita beramal, sholat, namaz, zikir, baca Quran, kemudian fasting, saum, Allah kalikan lagi 700 lagi. Jadi kalau kita subhanallah, ucapkan 1 subhanallah waktu di jalan Allah, 700.000 dikali 700. Jadi 490 juta. 490 juta kebaikan. Kalau di bulan Ramadan ini, dilipat gandakan lagi menjadi 70 kali. Maka 490 juta dikalikan 70 kali, berarti 34 miliar 300 juta. 1 subhanallah, Allah ganjar 34 miliar 300 juta. Kalau Bapak keluar di bulan puasa ini, baik 3 hari maupun seminggu, subhanallah. Insya Allah. بھائی نے فرمایا جب رمضان میں نکلیں گے اللہ پاک جو ہے نا عمل کو بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ایسی بغیر رمضان کے جائیں گے تو ایک نماز کی جو ہے نا اللہ پاک کتنے فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اس کو 49 نمازوں کا ثواب ملے گا. 49 کروڑ نماز کا ثواب ملے گا. ایک دفعہ سبحان اللہ پڑے گا 49 کروڑ سبحان اللہ کا ثواب ملے گا. 1 روپیہ اپنی جان پہ لگائے کتنی 700 صدقے کا ثواب ملے گا. 7 لاکھ صدقے کا ثواب ملے گا. بھائی نے فرمایا رمضان میں لگائیں گے تو اللہ پاک اس کو جو ہے نا اجر ڈبل کر دیں گے. جو ہے نا کروڑوں کے حساب سے اللہ پاک جو ہے نا نمازوں کا ثواب دے گا. کروڑوں کے حساب سے جو ہے نا سبحان اللہ کا ثواب دیں گے. اور جو ہے نا کروڑوں کے حساب سے اللہ پاک جو ہے نا یہ روپے کے جو ہے ثواب دے گی. اللہ کے دین کے لیے انشاءاللہ اعظم فرمایا. Kya naam bhai? Dan jangan lupa bahwa ya, setelah kita keluar ini juga kita libatkan istri kita untuk keluar masyuro. Karena petunjuk Allah yang cash itu melalui keluar masyuro dan pedal. Jadi hidayah ini akan cepat sekali bercucuran ini melalui jemaah masyuro dan jemaah pedal. Jemaah jalan kaki. میں نے فرمایا انشاءاللہ ہم نیت کرے کہ جو ہے نا پاکستان کے اندر اندرون سال کی جو ہے نا ارادہ فرمایا انشاءاللہ پیدل سے جو ہے نا اللہ پاک کے غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک جو ہے نا اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں جو ہے انشاءاللہ نازل ہو جاتی ہیں. Masyaallah. قرآن کا ارادہ بھی بیٹے کے اس کے لیے دعا فرمائیے خاص. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یہ کوئی رہے نا یہ ارادے سے انشاءاللہ العزیز سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ مثال. Amin. Oke, bye. Come up. Stand up. Insyaallah. Niat. Insyaallah. سلائی کے بعد چلے گا بھائی پرویز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سویدار کے سودا نقد کوئی کرا دیں 3 دن ڈاکٹر صاحب کا جماعت بن جائے. Okay, come, young man. You're still young, energetic. Come. 3 days نقد 2 days. Cash, 2 days, inshallah. 2 days. Come, 2 days. 2 days, inshallah, 2 days. Okay? For 2 days, cash. Still, in this Ramadan Mubarak, we are still have remaining Ramadan 6 or 7 days. Only 3 days. You know, if you go in the path of Allah in this Ramadan, 1 subhanallah, Allah will reward you 34 billion 300 million. 1 subhanallah. 1 Holy Quran, Alif Lam Mim. These 3 Alif, you've got 34 billion 300 million. Reward from Allah Almighty. بھائی فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو گے اللہ کے راستے میں نکل کے رمضان میں 3 ارب 34 کروڑ مرتبہ پڑھنے کے برابر اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. ایک مرتبہ جب آپ پڑھو گے رمضان میں اللہ کے راستے میں نکل کے. اور یہ ایسے نہیں فرما رہے, یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کوٹ کر رہے ہیں, یہ اس حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں. کتنا اجر مل رہا ہے؟ 3 ارب 34 کروڑ مرتبہ پڑھنے کا اجر ایک دفعہ جو پڑھے گا اللہ کے راستے میں رمضان میں نکل کے. تو دیکھو کتنا اونچا کام ہے اور کتنا بڑا بزنس ہے یہ. تو ابھی بھی موقع ہے, ابھی 6 دن ہے ماشاءاللہ. 3 دن اللہ کے راستے میں لگا کے تو واپس آیا جا سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے امیر صاحب کوئی انشاءاللہ کوئی ہمت ہو جائے, کوئی کوشش ہو جائے کہ 3 دن کی جماعت تیار ہو جائے کوئی انشاءاللہ نقد. جمعے سے ارادہ فرما رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ تو بیٹھ کے ترتیب بنا لیں گے.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik dosa mereka yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa daripada anak-anak istri kami ya Allah, baik dosa mereka yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kaum muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya Allah, sempurnakanlah iman kami. Ya Allah, sempurnakanlah ilmu kami. Ya Allah, sempurnakanlah amal kami. Hantarkanlah diri kami lebih lama lebih jauh ya Allah, ke sebuah alam ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan diri kami yang dhaif ini ya Allah menjadi asbab turunnya hidayah. Hidayah untuk diri kami, hidayah untuk keluarga kami, hidayah untuk tetangga kami, hidayah untuk seluruh sekalian manusia seluruh alam ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, apa yang Nabi dan Rasul minta ya Allah, itu pula yang menjadi permintaan kami. Ya Allah, apa yang Nabi dan Rasul tolak ya Allah, itu pula yang menjadi penolakan kami. Kabulkan semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin.